together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात or dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है शाहीन उर्दू. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका होस्ट उमर और शाहीन उर्दू के इस एपिसोड में आप तमाम का खैर मकदम है. नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने टेक्नोलॉजी और एकेडमिया के मैदान में अपनी ख़ास पहचान बनाई है. डॉक्टर हमज़ा मतर अल-शामरी साहब एक मशहूर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और रिसर्चर हैं और एकेडमिशियन भी, जो इस वक्त बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी यूके में लेक्चरर और डिप्टी कोर्स के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. मानो से अपनी पीएचडी मुकम्मल करने के बाद उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से नुमाया तहकीकी काम किया है. आज हम उनसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिक्योरिटी और तालीम के मुस्तकबिल पर दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं. तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हमज़ा से. डॉक्टर हमज़ा, शाहीन उर्दू के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है. वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर हमज़ा. Thank you very much. So Dr. Hamza, please tell us about your professional life, what you are currently doing, especially in the UK, what you're currently doing there. First of all, I would like to thank you and thank Manu for inviting me for this show. I am a lecturer in cybersecurity at Birmingham City University. I'm also beauty course lead for the same course, cybersecurity course. And my duties is, I have three type of duties. Teaching, of course. We're teaching different cybersecurity modules like cybersecurity attack and defenses, computer systems, ethical hacking, and different type of security modules. Then research. Of course, we do research cybersecurity, in network security, participating in conferences, workshops, and publishing in journals. Then the third duty is the leadership or management duty as deputy course lead, maintaining the course, keep the quality of the course, contracting with the accreditation bodies and likewise. Right. So all of this like rounds up your job profile as to what you're doing there in the university. Yes. Right. So could you tell us or our viewers and listeners about what cybersecurity is? Like if you explain it to a layman what cybersecurity is, so what all it deals with? A little light on the topic. Cybersecurity is like part of computer science. It's a specialization of securing data and tenants on internet. Like when people are communicating on internet, sending each other emails or messages. So cybersecurity is to save these data or information or messages through internet. Also save people privacy
sensitive information like medical records or ID card information. Also bank accounts, so it saves cybersecurity. Main goal also to secure people's finance, bank account, money transactions and so on. तो दोस्तों जैसा आपने सुना, जैसे अपना डॉक्टर हमजा ने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी इज़ बेसिकली एवरीथिंग डीलिंग विद योर डिजिटल डेटा। तो हमारा आजकल ज़माना जो है वो एनालॉग से अब डिजिटल पे जैसे शिफ्ट हो चुका है। आप नंबर्स आप डायरी में सेव ना करने के बजाय आप अपने फ़ोन में सेव करते हैं। सो वो एक फ़ोन का सेव नंबर आपकी एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी वो आप तक ही रहे, वो और कोई ना ले, या उससे कोई स्कैम ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो। तो दैट एरिया डील्स विद साइबर सिक्योरिटी विच आवर टुडेज एक्सपर्ट्स इज डीलिंग विद। सो यहाँ पे वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। बनी रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम तारीख के उन दिलचस्प सफ़ों को खोलते हैं जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी है मोटरसाइकिल की। साल था 1876। जर्मनी के इंजीनियर निकोलाउस ओटो ने दुनिया का पहला सफल 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन तैयार किया। ये इंजन, जिसे ओटो साइकिल के नाम से जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स की दुनिया में एक बड़े इनकिलाब की बुनियाद बना। इस इन्वेंशन ने छोटे, ताकतवर और ज्यादा भरोसेमंद इंजन बनाना मुमकिन कर दिया। फिर आया 1885। जर्मनी के 2 इंजीनियर्स गॉटलीब डाइमर और विल्हेम मेबैक ने निकोलाउस ओटो के 4 स्ट्रोक इंजन को एक लकड़ी के 2 पहिया फ्रेम पर लगाया। इस मशीन का नाम था राइट वेगन, जिसे दुनिया की पहली पेट्रोल पावर्ड मोटरसाइकिल माना जाता है। आज की मोटरसाइकिल से बिल्कुल अलग राइट वेगन का फ्रेम लकड़ी का था और बैलेंस बनाए रखने के लिए इसके दोनों तरफ छोटे सपोर्ट व्हील्स भी लगे हुए थे। इसकी रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भले ही ये देखने में सादगी भरी थी, लेकिन इसी ने मोटरसाइकिलिंग के नए दौर का दरवाजा खोला। इसके बाद मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की करती गई। बेहतर इंजन्स, मजबूत स्टील फ्रेम्स, सस्पेंशन सिस्टम्स और ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ने मोटरसाइकिल्स को ज्यादा सुरक्षित और तेज बना दिया। 20th सेंचुरी तक मोटरसाइकिल्स पुलिस, आर्मी, पोस्टल सर्विसेज और स्पोर्ट्स का अहम हिस्सा बन चुकी थी। फिर मोटरसाइकिल रेसिंग ने इस मशीन को दुनिया भर में और भी मशहूर कर दिया। आज की मोटरसाइकिल्स में फ्यूल इंजेक्शन, ABS ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, GPS नेविगेशन और इलेक्ट्रिक मोटर्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज शामिल हो चुकी हैं। लेकिन इन सब की बुनियाद उस इंजन ने रखी थी जिसे निकोलाउस ओटो ने बनाया, और उस पहली मोटरसाइकिल ने मजबूत की जिसे डाइमर और मेबैक ने दुनिया के सामने पेश किया। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल सिर्फ 2 पहियों पर चलने वाली एक मशीन नहीं है। ये इंजीनियरिंग, इनोवेशन और इंसानी सोच की वो मिसाल है जिसने सफर को आसान, तेज और यादगार बना दिया। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक सुरक्षित सफर कीजिए, हेलमेट जरूर पहनिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे
Histories, mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. दोस्तों वेलकम बैक। वेयर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर हमजा और हम बात कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। Dr. Hamza, my first question was earlier on. I asked you about what you're doing in the Birmingham City University and regarding the cybersecurity. So let's shift back a little and let me ask you about your time at Manu, since you've been a student here. So what is your view about the education journey here, that about the time that you spent here in Urdu University? I came to Manu in 2016 as a research scholar, a PhD student. So the first impression was like, I'm going to an Urdu university. Maybe the modules or the subjects I'm going to study or research is gonna be in Urdu. So I was a little bit. I love Urdu language. Well, I was excited, but also I was worried. But you had your apprehensions regarding it as to how you're going to study there in Urdu. Exactly, in Urdu. because it was like different Right. language, new language to me. Ji. But I arrived to Manu, then it was okay. Like as a foreigner or international student, I was having the opportunity to have bilingual studies. So I had my research in both Urdu and English. So the university provided me with Tersili Urdu course, which was really beneficial in my coursework for the PhD. The faculty members were very helpful, especially when things come to Urdu. They try to make it easy to me. I attended a lot of like Urdu occasions or events. Exactly, Lovely. like Jasni Bahara and a lot of Musara. So that improved my understanding of the language. Right. So were you like properly into this subject, or was it something that led you to cybersecurity in your student era? So when I came to Manu, I was about to study PhD in computer science in general, especially in networking. So networking is a big ocean. So I was like sitting with my supervisor discussing in weekly basis. Then we come to like a conclusion that I should work in network security. So my supervisor, Professor Pradeep Kumar. So I sat with him. We decided to go into that route. So I'm hearing that Professor Pradeep he helped you in your journey. So how did Manu in the whole play a role in your journey, and how was the academic environment here? First of all, the support by the department itself, by the dean, Dr. Abdul Wahid, and the faculty member were really appreciated. So the staff members helped us in providing us the classes, the necessary resources for research. Also, the library was a very good resource where I spent most of my time in Manu. I was in the library. The workshops and the conferences we were sent to or we organized. So this really shaped my journey in Manu. Also, the online resources that we were provided with. So a lot of resources were provided by Manu, which was really appreciable and were precious to me.
राइट। सो जैसा दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर हमजा की जर्नी, अपना एकेडमिक जर्नी के बारे में, तो अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर हमजा, वीड लाइक टू नो हाउ वाज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक यू बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम द हेलिंग फ्रॉम द अरब लैंड्स, so there the sport is a lot of prominence, holds a lot of prominence over there. So how was it like here, the extracurricular activities? Did you indulge yourself in any? There was a lot of activities organized by Manu. Like if we come to sport, I used to play football a lot with some like classmates and juniors. Also the badminton, tennis table. There was a lot of activities. The gym was always open, so we have to go sometimes. So there were a lot of activities. Apart from that, also we were like the development activities were a lot, where we used to go for CPDs, workshops, for example, Olympiads and conferences, yeah. exactly. For example, also the research methodology workshops and general research workshops were really beneficial. Right. So, but did you indulge yourself in any conferences here? Like the workshop and conferences? What particularly, is there a particular workshop or conference that reminds you of Manu, of your time at Manu? There was a conference we organized in 2019, if my memory got. Yeah, so that was a conference organized by our department, where people came from different parts of India. So that was the first conference. Real exposure of students across India. Exactly. So that was it was a national conference. It was the first conference I personally participate and organized. I was one of the organizing committee. So I learned a lot. I learned a lot how to organize conferences, how to review papers, and contact with different scholars around the country. So as a student here also, the faculty here indulged you in organizing conferences and all. Exactly, yes. And that was... So that gives you a lot of exposure as a student here. Exactly. दोस्तों यहाँ पे वक्त हो चुका एक ब्रेक का, हम अभी गए अभी आए, बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर और हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ। वो मुगल सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी शायरी, सूफी मिजाज और अदबी ज़ौक़ से भी जुड़ी हुई है। जफर ने एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजारी जब हिंदुस्तान सियासी और समाजी तब्दीलियों से गुजर रहा था। उनकी शायरी में दर्द, हिज्र, तन्हाई और वतन से मोहब्बत के जज्बात गहरी शिद्दत के साथ नुमायां होते हैं। बहादुर शाह जफर की गज़लों की खास बात उनकी सादगी, असर आफरीनी और जज्बात की सच्चाई है। उनके आशार दिल के दर्द और जिंदगी की नापायदारी का आईना मालूम होते हैं। आइए उनकी चंद मशहूर आशार सुनते हैं। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और उनका ये शेर तो उर्दू अदब की तारीख में अमर हो चुका है। कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में।
और एक और दिलसोज शेर। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी की दिल का करार हूं। बहादुर शाह जफर की शायरी एक गुजरी हुई दौर की याद, इंसानी जज्बात की गहराई और वतन से बेपनाह मोहब्बत का पैगाम देती है। इसीलिए उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन के दिलों में जिंदा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थी अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। दोस्तों वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हमजा से शाहीन उर्दू में। डॉक्टर हमजा, वी स्पोक अ लॉट अबाउट योर लाइफ एंड टाइम एट मानू हियर। ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ एट मानू, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इट मेड यू स्पेसिफिकली प्राउड of your stay here, or made you happy, which still brings you joy? First of all, is my supervisor was very friendly. He was like a father to me. He was very supportive. He was appreciating what I do. He was motivating me. If I feel low, he brings me up. Also, the support we got from Professor Abdul Wahid, the dean of the school, also from other faculty members, Dr. Khalil Ahmad, Dr. Mukim, and Dr. Jamil Ahmad. So all of them were really supportive. We didn't feel like we are on our own. There was like somebody backing us up, supporting us in our research journey, also in life journey. So we were discussing with them our issues. The other thing is my classmates. We were like sharing our research. This was supposed to be my next question. This was the question that I wanted you to lead to. So, Dr. Hamza, I wanted to ask, what was the environment like when it comes to your classmates, your friends, your peers, who were actually the backbone of your study period here, or wherever you go, whatever people that you surround yourself with, how were they like? Because they completely come from a completely different diaspora. So I want you to share your views with us and our viewers as to how your time was when it comes to your peers. So the communication with my peers started from the interview day. So we met in the interview on the interview day. So we talked about each other and we wished each other luck. So then when the result came, so we met in the university for the paperwork. So from that day onward, so we had to meet in like almost every day in a research scholar room in the department. So we started to each other. So when in the initial time, we still our like research topics were not clear. So we used to sit together and discuss like everybody's topic and try to refine it, try to come to a conclusion with a good topic, of course with the support of our supervisors. But that was what was happening with the peers. The peers were helpful. Dr. Fariha Rashid, Dr. Musaid, and Dr. Abdul Mannan, Oli. So these are my colleagues or my classmates. So I still interact with them. They are really very good people. Your time has fared well here, because a lot of people that you're speaking about here have now become lecturers here in the university as well. So good to you. So my final question, Dr. Hamza, what message would you have for your viewers, your listeners, and the students who are
looking to get into this field of computer networking, cybersecurity, or just computer science in general? First of all, And specifically, who are like looking to get into Manu and have Urdu as a mainstream stream of communication. Okay, first of all, I would like to thank Manu for accepting me as a student, which was really like a glad. Second, I would like to thank my supervisor, Professor Pradeep Kumar, for the time spent with me and bear with me, and also Professor Abdul Wahid for all the support he gave us the entire journey. Also, my classmates. Second thing, I would like to tell to students who are doing right now, who are studying right now in Manu, to keep the dedication, keep the hard work. You have one of the best faculty members I have ever also met. They are really experienced. They are really helpful. Try to take as much as you can from them. They are really helpful. They will never say no to you as long as you want to learn. Also, I'm telling people who are want to get into Manu, don't hesitate. Manu is really a good place to study. Urdu language is really lovely language. I entered to Manu with, I don't know what is Urdu. I just know a little bit of it. A lot of apprehensions. True. Yeah. So when I dive deep in Urdu language, so I love it. Till today, I'm in love with Urdu language. I always listen to poetry. I read some newspapers in Urdu, adab, literature. So Urdu is really good language, and the language will not be a barrier for your education. You can do the education in Urdu, also in English. So Urdu language also will help you to promote the education in this particular. So I want to tell students who are willing to join Manu to don't hesitate. Join Manu. It's a very good place. You will learn a lot, and you will find the outcome or the result when you finish your courses at Manu. Thank you so much, Dr. Hamza, for being with us, for enlightening us, and for letting us know that language should not always be a barrier. Language can never be a barrier. जैसा कि दोस्तों आपने सुना हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू डॉक्टर हमजा से, और जिस पर्पस के लिए हमने ये शाहीन उर्दू स्टार्ट किया, आपको बताने के लिए कि उर्दू और ज़बान कभी भी एक रुकावट नहीं ला सकती. इज़ जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कोई भी लैंग्वेज हो, कैसे भी हो, आपको तालीम हासिल करने से रुकना नहीं चाहिए, और वो रोक नहीं सकते आपको. तो आज के एपिसोड में इतना ही. बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. दिस इज़ योर आरजे उमर साइनिंग ऑफ. You were listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.